Welcome friends, in this video we try to show how to install aftermarket crash guard in KTM 390 Adventures which was purchased from Hyperrider. We plan to install that because the company provided stock crash guard not protect all the area of that bike, and in this video we show you the process how to remove that stock one and install the new crash guard in your KTM 390. Let's unpack this quickly and show you how to install it in your bike. From Hyperrider, and it is well packed, you can see that, and looks steady too also. So let's unpack it quickly. One part done. Another part also done. With these crash guards, they gave you some screws and washer, as well as some sliders also, and including nut. Total 8 big screw and 2 small screw they provided. Let's begin. At first we remove the stock crash guard from KTM 390 Adventures, and then we install new crash guard over there. Let's start. I will show you the place where the stock one fitted, and we have to remove that from there. Then your new crash guard can be installed over there. Keep all the screws and nuts of your stock crash guards in a proper way. If necessary, you can able to fix it again in your bike. So remember that. Stock one removed, we install the aftermarket crash guard in KTM, same place where the stock was open. Rear master cylinder, take some precaution when you install that one. Rear master cylinder was fitted over there, and you have to remove that and again refit it over there. This is the slider they provided with this crash guard, and we fixed it in the right side of this crash guard. In the same way we fixed it on the left side of this crash guard too.
लेफ़्ट साइड में भी हम लोग सेम जो एरिया से वो जो पुराना ओल्ड स्टॉक का क्रैश गार्ड था वो हम लोग को पहले खोल लेंगे। एज़ यूजुअल 3 पॉइंट से उसको खोलना है, खोल के उसको रखना है और वही सेम प्लेस में फिर से नया आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाना है। तो एक चीज़ माइंड में फिर रखना है, फिर से और एक बार बता रहा है, जितना नट्स एंड स्क्रू इसमें से बाहर हो रहा है उसको खोल के अलग करके रखना है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको फिर से हम यहाँ पर लगाना सकेंगे। इसके लिए थोड़ा हम लोग का साइड वाला जो पैनल है इसको भी थोड़ा खोलना पड़ता है, चेन के ऊपर जो कवर रहता है, क्योंकि नई कवर खोलने से वो वाला फिक्स नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग खोल के बाहर कर ले रहे हैं। फिर जो नट है इसको खोलना है, खोल के हम लोग को फिटिंग करना है। तो नया क्रैश गार्ड हम लोग फिर वहाँ पर बैठा रहा है, जो एरिया था वो सेम एरिया में हम लोग उसको फिर बैठा रहा है लेफ़्ट साइड में। चलिए बैठा रहा है, देखिए बैठ गया ठीक से। अभी हम लोग को स्लाइडर्स और बाकी चीज़ जो है लगाना है। We use some rubber washer to absorb the vibration. You can also use, or you may not, if you require you can able to use, or if you not, that is your choice. Now fixed it in the same way. यहाँ पर जितना टूल्स और टैकल्स रहता है वो अगर घर पे नहीं मिलेगा तो आपको कोई एक्सपर्ट्स मैकेनिक के पास जाके इसको करा लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं दिखाने के लिए, आप घर में भी ये चीज़ कर सकते हो अगर आपके पास टूल्स और टैकल्स रहेगा तो। और इसके बाद हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपका हम लोग का पीछे का जो सैडल स्टे है, सैडल स्टे हम लोग इंस्टॉल करेंगे सेम KTM 390 एडवेंचर में, वो भी परचेज फ्रॉम हाइपर राइडर्स। तो उसका भी वीडियो अपलोड कर रहा है हम लोग एक साथ में, आई बटन में इसका भी लिंक हम लोग दे दे रहा है। तो अभी मोटा मोटी हम लोग का फिटिंग्स कंप्लीट हो गया, बाकी है क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग का स्लाइडर्स लगाने का। तो स्लाइडर्स लगा लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का इंस्टॉलेशन भी। याद करके हम लोग का जो चेन का जो कवर है उसको कवर को भी फिक्स करना है, क्योंकि कवर तो हम लोग खोला था उसको फिटिंग करने के लिए वो भी इंस्टॉल कर लेंगे, लगा लेंगे। कवर भी इंस्टॉल, कवर करने के लिए जो 3 स्क्रू होता है वो 3 स्क्रू भी ठीक से लगा के थोड़ा टाइट कर लेना है, देख लेना है ठीक से लगा के नहीं लगा। चलिए यहाँ का छोटा 3 तो पतला स्क्रू और ऊपर की तरफ 1 तो मोटा स्क्रू हम लोग लगा लिया। कवर लगाना कंप्लीट हो गया हम लोग का काम, सिर्फ बाकी है स्लाइडर्स लगाना। ओके, थैंक्स। फाइनल लुक ऑफ आवर क्रैश गार्ड्स, लुक हाउ इट्स लुक्स, शेयर योर कमेंट्स, थैंक्स इन एडवांस।